everyone, welcome back to my channel. So this time I took another fitness challenge and I recorded the whole week of doing it. So the challenge was walking 5000 steps in 10 days. I saw a lot of videos in which people have done 10,000 steps, 15,000 steps, but मैंने खुद को बहुत ज़्यादा कुछ rigorous workout नहीं देना था, and that's the reason कि मैंने 5000 steps choose किया, which was achievable to me, and I thought I'll be consistent in it. So I took this challenge and I walked 5000 steps for 7 days. So the time taken each day was approximately 1 hour, and I had the privilege कि मेरे घर के पास में एक बहुत ही सुंदर पार्क था, which I don't use it, I don't go regularly, but for this particular thing मैं रोज़ सुबह उठ के जाती थी पार्क में एंड वॉक करती थी. इन द मॉर्निंग ज़्यादा लोग होते नहीं थे तो आराम से मैं अपना टाइम स्पेंड करती थी. सो आई रिकॉर्डेड द होल एक्सपीरियंस, सो आई होप यू विल एंजॉय इट. गुड मॉर्निंग. सो इट्स डे 1 ऑफ द चैलेंज एंड राइट नाउ मैं आ गई हूँ अपने घर के पास वाले पार्क में. इट्स 5:30, सो अभी यहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं हैं, 4-5 लोग ही है, which makes it easier to shoot this. It's still a bit dark. I've just started and I don't know कि 5000 steps कितना होगा. So let's see कि कितना टाइम लगता है 5000 steps complete करने के लिए. Let's walk. So मैंने इस पार्क का ऑलरेडी एक राउंड लगा लिया है एंड आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड 1400 स्टेप्स एंड नाउ अंधेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है. बट द ब्रीज इतनी मस्त हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, बहुत मज़ा आया वॉक करने में. So I have successfully completed 5000 steps for day 1 and बहुत ही मज़ा आया. Now for some people it's really easy because कुछ लोग शायद रोज़ इतना चलते हैं, but मेरे फिटनेस ट्रैकर ने for the first time 5000 रिकॉर्ड किया होगा. Normally it records 1500 to 2000 steps and it took me 40 minutes to complete this because मैं normally बहुत easily walk कर रही थी. So yes, that's day 1. गुड मॉर्निंग. इट्स डे 2. तो सबसे पहले मैं थोड़ा स्ट्रेच करूँगी, उसके बाद मैं आज वॉकिंग स्टार्ट करूँगी. So I have completed day 2 with 5000 steps. I am a bit sweaty but really happy with this achievement. So now I'll meet you in day 3. Good morning. So it's day 4 or 5, I don't remember, but it's 5:40. So मैं निकल रही हूँ for walking. So I completed my steps for the day and जो last थोड़े से steps थे I tried to jog instead of just walking. And ऐसा नहीं था that I was really tired or something. So I tried to push my limits and yes, थोड़ा सा jogging किया. And I'm all red right now. The walking challenge is very easy to start क्योंकि आपको कुछ भी तामझाम नहीं चाहिए. All you need is a pair of shoes. वो भी अगर आपके पास है तो it's really good. Otherwise that's also not needed. You can do it outside and अगर बाहर ऐसी कोई जगह नहीं है तो you can just do it अपने घर के अंदर, और if you have छत वगैरह तो वहाँ पे भी जा सकते हो. That's up to you. It's day 5 and I got up really late
I got up at 8:30 and now it's 9 AM. So बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप हो गई है, बाहर नहीं निकल के आज वॉक कर सकती, बट आई डोंट वांट टू मिस, तो मैं घर पे ही वॉक करूँगी. सो आई टाइप वॉकिंग एट होम, तो एक यूट्यूब चैनल खुला विच इज़ दिस वॉक एट होम बाय लेस्ली सैनसम, एंड इसमें ये 45 मिनट्स का वीडियो है जिसमें यू हैव टू वॉक विद हर. सो आई विल बी वॉकिंग विद हर टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Together. Step out. So easy side steps. 8 more. Here's 8, 7, 6. There you go. Easy steps. This isn't a program that's choreographed with dancing moves. It's a walking program. Try a knee lift. All you do is lift your knee as high as you can. Just lift up. Lift up. This is the time where I like to talk about posture, because once you walk back, when we start putting the muscles in motion, that's when you've got that higher calorie burn. So today was the last day of this challenge and I have completed it, and now I'll be checking my weight. So that was the challenge and I lost a total of 500 grams, यानी कि half a kilo in 7 days. So I would recommend this challenge to anyone who wants to start something really relaxing और ज़्यादा अपने ऊपर बिना pressure डाले. You can easily start this walking thing. So the question is that why did I take this challenge? I took this challenge because I did not want to do something rigorous, but I wanted to take an activity जिसमें कि मैं consistent रह पाऊँ. That's the reason that I took the walking challenge. Now these 5,000 steps were just in the morning. I did not take into consideration जो भी मैं पूरे दिन में उसके अलावा अगर walk करती हूँ तो. So when I looked at the stats, so पूरे दिन के अगर मैं देखूँ तो मेरे obviously 7 to 8,000 steps भी हो जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं. But this 5,000 steps was specifically for the morning, जो कि मैं morning में walk करती थी. That was it. So that was my whole experience, and if you like this video then click on the like button and also subscribe for more fitness challenges. Bye bye.